you have clicked this video is surely going to be a game changer for you in your coming exam. Hey everyone, I'm Mavleen Kaur and I'm here to give you a few tips that is surely going to help you out in your exam. So let me tell you about my preparation. I have read ISC book for so many times and I have revised all the topics for like uncountable times, and plus I have also read NCRT by heart. I have gone through each and every topic very deeply and thoroughly, so you can trust me. Obviously, I'm not going to talk about my strategy because we all are different. So there is no way that you can follow my strategy or I can follow your strategy, because I don't know what is the level of your preparation, because I don't know कि आपने अभी तक अपनी बायोलॉजी की बुक खोली भी है या नहीं. So we are different, okay? As I have already told you about my level of preparation, so now I'm going to level up your preparation too by giving you few tips which are going to help you out to chalk out your strategy. Tip number 1. If throughout your year you haven't given much time to biology, I'll suggest you to go with the syllabus. Prepare your exam systematically. Just open the syllabus and see the topic, like in this chapter, let's say sexual reproduction, and this subtopic is given. Just prepare according to it, all the topics that are given in your syllabus, because there is no time for you to do extra things. Don't go deep, just follow the syllabus and do those subtopics and topics that are given in the syllabus. Don't do extra because you don't have much time left. If you have done things very deeply and you have conceptual knowledge, then you are good to go. That is the best thing you have ever done, because ISC Council is only going to check your conceptual knowledge. They are going to check your understanding, they are going to check your application ability, how you are applying that concept. If all the topics are conceptually clear, then you will ace that exam, because the questions are not theoretical. They are not going to ask you to write down all the things and to write short note on this, to describe all the post fertilization events. They are not going to ask you the straight question. They are going to give you googly questions. They'll give you questions that have one word answer. So be conceptual with your knowledge. I suggest you don't cram. At this point, don't cram, because I'm telling you, they are not going to ask you long answers. They are going to ask you to the point answers. So prepare accordingly. Stress more on the terms like keywords. Let's say in transgenic animals, there is a rosy cow which has alpha lactalbumin. That gene is very important because it has human milk nutrient. It has human milk protein like nutrient. So these are the things. They might ask you which gene is present in that first transgenic cow. What is the name of first transgenic cow? They can ask you anything. So you have to study very precisely. But जितना पढ़ रहे हो, I would say quality over quantity. अच्छा पढ़ो, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़ो. इस पॉइंट पे आके तुम डीपली नहीं कर सकते हो, सो अपना टाइम वेस्ट मत करो. दे माइट गिव यू फ्यू एग्जाम्पल्स लाइक pea, castor, bean. Just label them as albuminous or non-albuminous seeds. So you should know that castor is dicot, but it has endosperm and it is albuminous, whereas pea and bean are also dicot, but they are non-albuminous. You should know these छोटी चीज़ें. Second thing, paper can be tricky. I'm telling you again and again, paper can be tricky, okay? There is no point of revising the whole syllabus for like 5 times, 6 times, 10 times or even 20 times. जब तक आप question solve नहीं करोगे, nothing is going to work. You have to solve questions, and for that I'm going to recommend you this book. ये मैं भी यूज़ कर रही हूँ, and this is not sponsored, guys. This is not sponsored. I chose Arihant over Oswal for some reason, because इनके answers are very detailed. Detailed answers दिए हैं topper style, and I just loved this book. मैंने example paper solve किए हैं. इस point पे आके you should not buy question banks, because इतना आपके पास time नहीं है to solve the whole question bank.
जस्ट गो फॉर सॉल्व पेपर्स बिकॉज क्वेश्चन का आपको एक तो पैटर्न पता चल जाएगा पेपर का एंड यू विल बी वेरी हैबिचुअल विद द पैटर्न। और आंसर्स करने में भी तुम्हें अगर सामने पेपर आ गया तो तुम्हें कुछ नया नहीं लगेगा। यू विल बी कम्फर्टेबल इनफ टू जस्ट डू योर पेपर। एंड देखो इसमें कुछ 15 सैम्पल्स है, पॉसिबिलिटी तो है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। So I would prefer you to just go for this book. It will take like 3 days. 3 days लगे थे, Amazon से order की थी मैंने and it is so good. I'm telling you guys, this is really good. You have to buy it if you want to ace your exam. आपको जैसे कि पता है न्यूमेरिकल्स भी आते हैं हमें, लाइक हार्डी वीनबर्ग तो आएगा ही आएगा, तो वो अच्छे से करना है। और भी बहुत सारे आते हैं ट्रिप्लॉइड वाले और PCR वाले, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स आते हैं। इसमें हर एक सैम्पल पेपर में जैसे कि हमें 1 या 2 न्यूमेरिकल आता है, वैसे ही हर एक सैम्पल पेपर में न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज यू शुड नो द फार्मूला। और हमारी ना ही ISC बुक में ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं और ना ही NCERT में। जितना मैंने पढ़ा है ऐसा कुछ नहीं है NCERT में न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड, लेकिन आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। 2 से 3 मार्क्स तक तो आएगा ही, तो उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी इस बुक से। मैं लिंक पक्का डालूँगी डिस्क्रिप्शन पे, यू शुड बाय इट। आई एम टेलिंग यू, मैंने ये यूज़ किया, तभी ये वीडियो लेट आ रही है क्योंकि आई वॉन्टेड to give an honest review about this book. For asking about my resources, I have read ISC biology for like 2-3 times. Now I think I'm reading it 4th time, and NCERT I have read it uncountable times because I was preparing for an exam. I'm just using this, plus I have solved PYQs also, and I have also gone through all the specimens like 2024 का specimen, क्योंकि 2024 में आके हमारा पैटर्न चेंज हुआ है। You should go through all the specimens of at least go through the specimens of 2024 and 2025 बिकॉज आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। इफ़ यू कांट अफोर्ड दिस, जस्ट सॉल्व स्पेसिमेन, यू विल गेट टू नो द पैटर्न को एनालाइज करो एंड दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्रिपेयर। जस्ट सॉल्व क्वेश्चंस, एक्टिव रिकॉल करो। ऐसे कुछ याद नहीं होगा जब तक तुम एक्टिव रिकॉल नहीं करोगे, आई एम टेलिंग यू। थर्ड टिप इज़ डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 2 से 3, आई गेस 4, पता नहीं कितने क्वेश्चंस आते हैं हमें डायग्राम बेस्ड। सो यू शुड नो द लेबलिंग ऑफ ऑल द डायग्राम्स दैट आर गिवन इन आवर बुक। इफ़ यू आर वेरी कन्फ्यूज राइट नाउ, और या फिर अगर आप पूरे एंड मौके पे आके देख रहे हो ये वीडियो, तो आई टेल यू NCERT में बहुत ही कम डायग्राम्स दिए हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स दिए हैं। तो अगर यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम देन गो फॉर NCERT एंड डू ऑल डायग्राम्स फ्रॉम देयर। ISC बुक में तो बहुत सारी डायग्राम्स दी हैं, लेकिन यू शुड डू रेलेवेंट वन, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम बचा है एंड डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। यू वांट टू सी इतने सारे, अभी और भी है, आई कांट जस्ट पेस्ट इट ऑल, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो एक तुम्हें डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी 3 मार्कर आता है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और 5 मार्कर ऐसे करके क्वेश्चन आता है। तो तुम्हें उस हिसाब से भी प्रिपरेशन करनी है। जस्ट टेक योर पेंसिल, आई प्रेफर यू देख के कुछ डायग्राम याद नहीं होगी, जस्ट टेक योर पेंसिल एंड ड्रॉ दैट डायग्राम एंड डू द लेबलिंग प्रॉपरली। 4th वन इज़ दैट 4 मार्कर एक क्वेश्चन आता है जिसमें इम्पॉर्टेंट वो होती हैं एब्रीवेशंस होती हैं 2 मार्क्स की, और 2 मार्क्स की डिस्कवरीज होती है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, तो ये तो तुम्हें शॉर्ट अपने 4 मार्क्स अपने पास रखने ही है। तो ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, काउंसिल की तरफ से ये सिलेबस में थे ये एब्रीवेशंस और डिस्कवरीज। ये तुम स्क्रीनशॉट ले लो एंड अच्छे से याद कर लो। अभी बहुत टाइम है, तुम कर सकते हो। तो मैंने पहले से याद करके रखे हैं क्योंकि ये आता ही आता है, शॉर्ट क्वेश्चन है, तो अपने 4 मार्क्स सेफ सिक्योर कर लो और ये याद कर लो। 5th पॉइंट, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा मेरे सीनियर्स के साथ हुआ है। उन्होंने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू द वेटेज जो ISC काउंसिल ने सिलेबस में दी रखी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। दे डोंट क्लेम टू फॉलो दैट वेटेज थिंग दैट दे गिव इन दैट सिलेबस।
सो डोंट ट्रस्ट ऑन वेटेज, डोंट जस्ट क्रैम जेनेटिक्स और जाके वहाँ चले जाओ और 2-3 चैप्टर कर लिए, चलो तो इनकी ही आएगी, वेटेज इनकी ज़्यादा है, पास तो हो जाएंगे। डो, आपको इक्वल इम्पॉर्टेंस देनी है हर एक चैप्टर को। जैसे एक माइक्रोब्स इतना छोटा चैप्टर है, लेकिन इसके 4 क्या इससे भी ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके। और ये कॉम्प्लिकेटेड भी है क्योंकि इसमें बहुत सारे साइंटिफिक नेम्स होते हैं, लेकिन देखो एक छोटा सा चैप्टर कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। तो आपको हर एक चैप्टर को इक्वल इम्पॉर्टेंस देनी है। दैट इज़ द थिंग दैट यू शुड रिमेंबर व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम। एट लास्ट मैं आपको बस यही बोलूँगी, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना। और ये भी मत सोचो कि फ़िज़िक्स का पेपर इजी आया था तो बायो का भी इजी आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट। जस्ट सोचो कि पेपर जैसा भी आए, अच्छा है बुरा है, यू हैव टू गिव योर बेस्ट एंड जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग। इतने हॉलीडेज़ थे, आई होप दैट आपने प्रिपेयर कर लिया है। और जो मेरे ग्रुप से हैं, जैसे जिन्होंने इतनी बार रिविजन्स कर ली है, तो प्लीज़ सॉल्व क्वेश्चंस। आई एम नॉट स्पॉन्सरिंग एनीथिंग, लेकिन दिस इज़ टू गुड गाइज, दिस इज़ टू गुड, यू हैव टू बाय दिस। और इसकी ई बुक भी मिल जाती है, तो यू कैन ऑल्सो सॉल्व ई बुक इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू वेट फॉर द डिलीवरी। I'll tell you guys, if you don't solve the questions, you will be confused, you will be traumatized when you come across the paper. You can level up your preparation by solving more questions. अब अभी का टाइम क्वेश्चन सॉल्व करने का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का है। अब जितना सिलेबस करना था कर लिया, अब जितना तुमने किया हुआ है बस उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ऐसा तो कुछ नहीं है कि बायो डिफ़िकल्ट है, हो जाएगी। अगर अभी भी तुम्हारे 2-3 चैप्टर्स अगर रहते, तुमने प्रिपेयर नहीं किया है, तो अभी भी तुम कर सकते हो अगर तुम चाहो। बस बाकी चैप्टर्स को तुम बार बार इतना रिवीजन मत दो। जैसे स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स है तुमने कर लिए होंगे, उनको इतना टाइम मत दो, उनको एक्टिव रिकॉल करो, उनके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और जो चैप्टर तुमने नहीं किए वो वाले करो। So these were all my tips. I hope that these are going to help you out, and I'm telling you, if you will follow all these tips, you are going to score really good. And just be with me, stay with me, we are going to discuss the paper. And that's it for this video. I hope that you guys are taking few suggestions, few advices that I give you all. You're taking all those advices with you and just chalk out your strategy and start preparing, क्योंकि time बहुत कम है and you have to score good. That's it for the video. Now I'm going to take your leave. Until then, just wanna back up, 우리가 함께 मैंने आपको all the best तो बोला ही नहीं, all the very best. I know you're going to rock. You are going to ace biology.